अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का लेसन नंबर 11 एनालिसिस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। वी डिस्कस इन लास्ट टू लेसन दोज campaigns and their marketing departments success depends upon the carefully analysis of the marketing environment. Opportunities are need to analyzing and chapter in order to market the profit changing market opportunities must be explored and pursued in order to correctly identify opportunities and monitor it. The company must begin with a thorough understanding for the marketing environment in which firm operates. The marketing environment consists of all the actors and forces outside marketing that affect marketing manager ability to develop the monitor successful relationship with the target customer. Third, these factors and forces may vary depending on the specific company and industry group can generally be divided into both micro environment and micro environmental components. इसके बाद है the vice marketing manager know that he or she cannot always affect environmental forces. However, smart manager can take a proactive rather than reactive approach to the marketing environment. As marketing management collectors and process data on this environment, they must be ever willing their factors to apply what they learn to development opportunities and detail. The trades studies have shown that excellent campaigns not only have a keen scan of customer but an operation of the environmental forces swelling around them by customer looking at the dramatic changes that are around creating the fundamental environment. Campaigns are better prepared to adapt to change, prepare long-range strategy, meet the needs of today and tomorrow customer and compete with the intense competition present in the global marketing place. जैसा कि ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ डायग्राम में दिखाया गया है। मार्केटिंग चेंजेस सबसे पहले सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, पेड सर्च, ऑफलाइन प्रोमो, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारा इसमें दिखाया गया है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इधर ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इज अ सर्चुअल एलिमेंट ऑफ इन effective marketing as a result of the trend toward global marketing. The translation from buyer needs to buyer wants and the translation from price or non-price competition. All firms operate in some form of marketing information system, but the system vary greatly in their in too many cases information is not available or comes too late or cannot be trusted. To me, companies are learning that the lack and opportunities information system. इसके बाद है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले इंटरनल रिकॉर्ड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस में। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में से नीचे आएगा मार्केटिंग रिसर्चेज में। मार्केटिंग रिसर्चेस में जाएगा मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। बाद में इसके ऊपर फिर जाएगा इंटरनल रिकॉर्ड में। ये सारा जो दिखाया गया है ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके बाद है ए द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। नो मैटर व्हाट टाइप द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वी रेफर द मार्केटिंग मैनेजमेंट नीड a great deal of information to carry out their marketing so as to provide a superior value and the satisfaction for customer. However, despite the growing supply of information manager often lack information of the right kind or have too much information of the wrong kind. इसके बाद है a well-designed marketing information system begins and ends with the user the messaging filter assess the information needs by environment marketing manager. Number 2 पे है the mesh nested development information and the help manager use item effectively. Internal records provide information has sales cost, inventories, cash flow and account receivable and payable. Such data and obtained quickly and cheaply by must often be adapted from making design. Number 3 point है marketing intelligence supply marketing executive with the every information about developments
in the external marketing environment. Number 4 है finally the marketing information system distribution information getting from internal sources, marketing intelligence and marketing researches to the right manager of the right times. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे इसके बाद हम बात करेंगे द वर्किंग ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफ़ अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोडक्ट्स पीरियड्स वैल्यू एंड satisfy for customer, marketing manager need information at almost every turn. The need information about customers such as reseller and user, as well competition, governmental and other forces in the marketplace. A marketing information system consists of place, people, equipment and producer to gather, store, analyzing, evaluate the distribute needs timely and occur information to the marketing decision markets. इसके बाद है assessing information needs. Marketing organization must establish what information is needed or likely to be needs. This is a key feature of the MIS that sources the important information. Number 2 development information. Internal record provide a wealth of information which is essentially raw data for decision making and effective organized and summaries, balance sheets, order schedules, shipment and inventories into terms that guide to management decision on the marketing mix changes. इसके बाद नंबर 3 पर marketing intelligence provides the everyday information about the environmental variable the manager needs as the implement the adjustment marketing plans. नंबर 4 पे है marketing research. Marketing research link the customer consumer and public to the markets through an exchange of information. इसके बाद the work of the marketing information system, ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है. for basic the main concepts of marketing information system: internal records, marketing intelligence, marketing research, marketing decision support system, ये सब इसमें दिखाया गया है. इसके बाद है सी is subsystem of marketing information system. A well designed marketing information system consists of 4 subsystems. Number 1 है the first is the internal record system. Number 2 है the second market information subsystem is the marketing intelligence system, supplying marketing manager with everyday information about developments in the external marketing environment. इसके बाद है नंबर 3 पे द थर्ड सब सिस्टम मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन देयर इज द रिलेवेंट स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंपनी. नंबर 4 पर है द फोर्थ सिस्टम इज द मार्केटिंग डिज़ाइन सपोर्ट सिस्टम. द कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिकली एंड डिसीजन टूल्स ऑफ एस मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग बेटर डिज़ाइन टेक्निक्स विद सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम. इसके बाद है डी पॉइंट वाई टू acquire information. Management mostly want to be able to predict the future of a company and its products. The future impress the total market demand and the nature of such demand, the company share by brand and what competitor will be doing. इसके बाद नंबर 1 पे द फिल्म इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम शुड बी सेटअप इन सच अ वे सो इजीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैनेजर कैन एक्ट ऑन, बट दिस इज लार्जली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सच हैज सेल्स बाय अकाउंट बाय ट्रेलिंग बाय सेल पर्सन एंड सो ऑन. नंबर 2 पे है वेल एक्सेप्टेड सेल पीपल इनवेरिएबल have strong relationship with the clients and begin close to them are privy to more information on the buying company's performance, suspension of the feature and even the view on the supplying company's strength and weakness as well as the competitor. इसके बाद है ये मार्केटिंग रिसर्च. द सिस्टम डिज़ाइन कलेक्टिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1 है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. नंबर 2 डेवलपमेंट द रिसर्च प्लान. नंबर 3 इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान एंड नंबर 4 है इंडिपेंडिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग. मार्केटिंग रिसर्च के बारे में इधर डायग्राम में दिखाया गया है. ये था आज का हमारा टॉपिक.
the strobe hits you. That's it, Brian?